So hello everyone and welcome back to our channel. So today we'll be doing the first PYQ of Jan 2025 term. Okay, what's Jan 2025 term QDF 2 AN. This is the paper code. So the questions are, let's just get started. Okay, so first question is how many activation records will be created? How many activation records will be created? Okay, so activation records, every time a function is being called, one activation record will be pushed into the stack. Okay, so just count how many times the method is being invoked. Okay, so the usual first thing is when we call c dot method 3, this is being called, so this is first, then this is calling method 2, so second, then method 2 is indeed calling method 1, wait, let's do it again. Let's just go to the function calls. Okay, first one, this is calling the function 1, so this is first, method 2 is second, because method 3 will call this one instead, so this will be 2, and method 2 will call this one, so this is third, and then at last method 1 will be called. No, sorry, method 1 is being called here only. So 3, 1, 2, 3, right, and 4 is the main. The main, obviously main is also function, so no, this will not be there. Okay, the fourth is correct. Okay, I counted wrong. I'll correct this in the video. Sorry, I'll correct this in the notes. Okay, so let's check once more. Main, let's see. So this is the first function call, c dot method 3. Method 3 will call this, so method 2, and this will call method 1, so 3. Okay, and 3, and then the main one. Okay, 4. Yeah, 4 is fine. Okay, next question. Consider the statement given below. Programmer is an object with methods write code and debug code. Okay, so programmer has two methods that are write code and debug code. Senior programmer is an object with methods write code, debug code, and review code. So let's see. Every senior programmer can do what a every senior programmer can do what a programmer can and do more. Okay, so the sub is a subtype. Okay, senior programmer is a subtype. Okay, so we need to check incorrect. Okay, how is this a subtype? Because subtypes are what? Subtypes are those classes which can do whatever the parent class can do and more. Okay, so senior programmer can obviously write code, debug code, but it can also review code. So this is an added functionality for senior programmer. That's why senior programmer is the program subtype. Incorrect. Senior programmer is a valid subtype. This is true. Okay, so don't get confused. Okay, subtyping allows programmer to be used whenever a senior programmer is expected. No, this is not correct, right? Because senior programmer can't, no, sorry, not senior programmer, programmer can't review code, fine, so that's why this is false. Okay, and we have to check the incorrect. Okay, then consider the Java code given below. Okay, what it asks, what will the output be? Okay, let's see. So first thing, what it is doing. Okay, we are going inside the main. It is declaring a number, that is int number is equal to 10, and then it is doing. Okay, so do while what it does, I have explained this in my theory videos, that it will run at least once, okay, before checking condition. Okay, it will run at least once before checking the condition. So first time it will run. So when it runs for the first time, I is the iteration. Okay, so iteration for the first time,
what it will do, it will subtract the number by 1. Okay, so after first iteration, the number will become 9. Okay, then it will check the condition, number is greater than 5, yes, this is greater than 5, and then it will do it again. Okay, it will keep running till the number is greater than 5. Okay, so for the second and for the third, for the fourth, it will run. For the fifth also it will run, but sixth one it won't run. Okay, so this is how the loop goes. And now this one is like 5 is not greater than 5, so sixth one will not be there, so that's why it will stop at 5. Okay, so number at the end of this loop will be 5. Okay, and since case 5 matches this, it is switch is basically matching. Okay, whichever case here our variable will match, that will be our what will get executed. Okay, so that's why it prints out low. Okay, so that's why the output is low. Okay, then choose the correct option. This code generates output. Okay, fine. Okay, let's do this. So let's see the main function. Okay, like main part से obviously तुम्हारा Java का जो code है वो run करता है. So let's see what the main function is doing. Okay, it is giving a fruits reference, but it is actually storing a grapes. Okay, grapes extend fruit, so it's a subclass, so that's fine. And then a is equal to new grapes, and as soon as we invoke the constructor, it is basically calling the super constructor, that is the constructor of fruits. Okay, so since it is calling the constructor of fruits, and so this will be the first line of output. Okay, so and then it will print this. Okay, and as soon as the constructor finishes running, it will run this line. Okay, so that's why this will be the second output, and then a dot display. So see, now this becomes a static method. Okay, a dot display, what it will check first, it will it basically checks a dot display is present where and where. Okay, it is present both in display, display is present both in grapes and in fruits, so it will take the grapes actual object containing. Okay, I explained this in my theory video also, like when it will take this and when it will take the fruits. Okay, watch that once if you're confused about this. Okay, since it is present in both, it will go to the actual object and not the reference. Okay, it will go to the actual object. Okay, so since the actual object is grapes, so it will call the grapes display. Okay, so that's why this line will be third. Okay, so first is fruit created, second is grape created, third is grapes. Fruit created, grapes created, grapes. Okay, fine. Then next, so same we need to check the output. Okay, and we have to check if any of the lines give us error. So let's start with the main. Obviously, so main function is, it is giving an animal reference, but it is actually storing a dog. Okay, so dog implements mammal, mammal extend animal, so animal, mammal, and this is being implemented to dog. So the animal is falling in the hierarchy of dog, so that's fine. So it is like, it is okay, it is fine. So line 1 is not an error. Okay, so then object obj.sound. Okay, so what it will call, obj.sound. So obj.sound will firstly it will check the animal. Okay, it will check the animal, it has a sound, but will not call that, because it will call the closest one. Okay, so since it will go to the dog, basically ये dog के अंदर जा रहा है, and it will call the dog class. Okay, and it will check that it is implementing mammal only. Okay, it is not implementing the animal. Okay,
So what it does, it checks the dog first. Okay, dog में नहीं है ना, dog में sound नहीं है. Okay, so it will check the mammal. Okay, so mammal में sound है, so it will print this. अगर यहाँ पे भी sound नहीं होता, then it would have went here. Okay, so ऐसे होता है, मतलब बेसिकली क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी मान सकते हो. एक और तरीका इसको समझने का ये है कि मैमल में जैसे ही हम इसको मैमल मतलब मैमल इंटरफेस को हम इंपोर्ट कर रहे हैं या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, it automatically gets the sound default sound. Okay, so that's another way, default implementation of sound from mammal. Okay, as soon as you implement this. Okay, so as soon as you implement mammal, it gets the dog basically gets the default implementation of sound. So that's another way of interpreting it. Okay, so as soon as you call obj.sound, it will check the dog and it will find the default implementation of sound from mammal. So it will print this. Okay, so this is first line. Okay. After that, obj.eat. Okay, now obj.eat, it will do the same thing again. It will go to the dog. Okay, and in dog it already finds the definition of it. Okay, dog ने खुद के लिए eat function define कर रखा है, so it will just call this one. Okay, so this is the second line. So दो output है ना, ये answer से this will be correct है ना, this is wrong answer, मैंने discourse को देख लिया है, this is correct, and मान लो मेरी बात, this is correct. मैंने समझा भी दिया कैसे सही है. Choose the correct option to fill in place a word so that the output is P1 and P2 and same. Okay, बेसिकली हमें दो दिए जाएंगे, player 1 and player 2. हमें ये जो equals नाम का फंक्शन है, हमें इसको ऐसे डिजाइन करना है कि ये दोनों it returns that these two are same players. Okay, these two players are equal in a way. So equal कैसे होता है, player ID and team name should be equal. Okay, so ये output, ये input सही आएगा है ना, मतलब ऑप्शन सही आएगा. Okay, if obj इंस्टेंस ऑफ प्लेयर, पहले हम अच्छा एक और चीज यहाँ पे देखो जो कि मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, ऑब्जेक्ट obj, this is taking an generic object as an input. Okay, so before checking we need to cast it as a player. Okay, if obj instance of player, if this dot player id, object dot player id and this dot team name. Okay, this seems true. Okay, this seems like a true, but let's say let's check the other one. Okay, oh no, sorry. अच्छा ये दूसरा वाला क्वेश्चन, वो दूसरा वाला क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूम रहा है. Okay, एब्स्ट्रैक्ट वाला. Okay, since ये लाइन सही है but it is not typecasting. Okay, it is not typecasting, so that's why it is wrong है ना. Okay, let's go over it again. Okay, see, हमें बेसिकली इक्वल्स जो ऑब्जेक्ट है, इक्वल जो मेथड है, हमें उसको ऐसे डिजाइन करना है कि जैसे ही हम इसको ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स पास करें जिनका प्लेयर आईडी और टीम नेम दोनों सेम हो, इट रिटर्न्स दैट द ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल है ना. सो दिस इज हाउ वी नीड टू डिफाइन द इक्वल्स मेथड. ओके, नाउ वी कैन सी दैट equals method is taking an generic object as an input. Okay, so for it to work we need to first typecast it to player. Okay, because we saw it in the theory video that two objects can only be comparable if they are they belong to the same class or they have the similar type. Okay, same type. So player 1 and player 2, if both of these are players then it is fine, but since it is taking an object, so whenever it is being passed as an object to the equals. Okay, so first we need to typecast it both to players. Okay, this यहाँ पे वो है दिक्कत है, यहाँ पे प्लेयर ही आएगा है ना. फाइन, so this is wrong because it is checking. Okay, the check is fine, but it is not typecasting. And in this all three lines are same, this line are same. It is basically just casting it also है ना. So this one is the correct option. Okay, because now both player 1 and player 2 are basically belonging to player class. Okay, and since they are the same class, and so the two objects can be compared within themselves. Okay, यहाँ पे टाइपकास्टिंग क्यों गलत है. ओके, आई थिंक ये वाला है.
फाइन. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन है ना. बेसिकली हमें चेक करना है कि लाइन वन मतलब लाइन वन इज गिविंग एरर या पूरा कोड स्मूथली रन करेगा, बेसिकली यही देखना है. सो मेन हमारा फंक्शन है, सो वी विल स्टार्ट इट हियर. ओके, व्हीकल v1 is equal to new car. Vehicle is defined and car is implementing vehicle, so this is fine. ये लाइन फाइन है. Then we call v1 dot drive. v1 dot drive. So v1 is basically vehicle. It goes to the car. Okay, first it goes to the car. So it goes to the car and it sees that drive is there. Car is driving smoothly. This is fine. It will print this. Okay. और जैसे कि हम थ्योरी में समझाया था, थ्योरी में जो समझाया था वो दो क्लासेस के बीच में था, है ना, ध्यान रखना. एंड दिस इज बिटवीन अ क्लास एंड एन इंटरफेस, है ना. तो अगर क्लास एंड इंटरफेस के बीच में है तो देन क्लास में जो है वही आएगा, है ना. दैट वी नहीं, वो हमने वो भी पढ़ा था. अगर क्लास और इंटरफेस में से है देन क्लास इज गिवन प्रेफरेंस. ओके, सो इट विल पहला तो ये है, ठीक है. दिस इज फाइन. ओके, v1 डॉट ड्राइव इज फाइन. बट v1 डॉट refuel, है ना, v1 डॉट refuel. बट यहाँ पे v1 इज अ व्हीकल इंटरफेस, है ना. v1 व्हीकल इंटरफेस है. डजंट, एक सेकंड, काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है अभी. अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक, ध्यान आ गया. एक्चुअली अभी सुबह उठ के कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें क्लियर नहीं है दिमाग में. एनीवे सॉरी. ओके, लेट्स गो ओवर इट वंस मोर. शुरू से करता हूँ ताकि बेटर समझ पाएगा. भूल जाओ जब तक जो भी मैंने बोला सब भूल जाओ. ओके, तो सबसे पहले वी स्टार्ट विद मेन. ओके, व्हीकल v1, है ना. सो व्हीकल इज एन इंटरफेस एंड कार इज व्हाट इज इम्प्लीमेंटिंग द व्हीकल. ओके, अब यहीं तक ध्यान दो, अब बस इतना ध्यान दो, कार इम्प्लीमेंट्स व्हीकल. ओके, सो दिस इज फाइन. Now it is calling v1 dot drive. Okay, v1 dot drive. So v1 dot drive basically क्या करेगा, it will check between the reference and the actual object, है ना. It checks between the reference and the actual object. Okay, reference क्या है यहाँ पे, vehicle interface. Actual object क्या है, class car, है ना. अब ये लाइन भूल जाओ, है ना. अब इन दोनों के बीच में कंपेयर हो रहा है ना, interface vehicle and class car, because the reference is a vehicle but the actual object it contains is a car, है ना. So fine, v1 dot drive is being called and it will check these two, है ना. जैसे इसने ये दोनों चेक किया, इसने देखा कि ड्राइव यहाँ पर भी है, ड्राइव यहाँ पर भी है. कौन, यहाँ तक क्लियर है. व्हीकल और कार में दोनों में ड्राइव है. सिंस क्लास इज मोर predefined या more well defined according to Java, so it will take the definition in class. Okay, so car is driving smoothly. This is fine, है ना. यहाँ तक हो गया. So v1 dot drive is clear. अब v1 dot refuel, v1 dot refuel अब वापस सेम चीज होगी, है ना. अब वापस सेम चीज कंपेयर होगी बेसिकली, क्योंकि व्हीकल अभी भी रेफरेंस है, कार अभी भी एक्चुअल ऑब्जेक्ट है. सो इट विल कंपेयर दीज टू अगेन. बट इस बार क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई रिफ्यूल नहीं है ना. यहाँ पे कोई रिफ्यूल नहीं है. दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है. अगर यहाँ पे भी रिफ्यूल होता और यहाँ पे भी रिफ्यूल होता तो यहाँ पे रिफ्यूल वो कर लेता. या फिर देखो यहाँ पे तीन चीज है इसको फिक्स करने के लिए. टू फिक्स, या तो तुम v1 को एज फ्यूल कास्ट कर लो देन रिफ्यूल कॉल करो, या फिर कार v1 इज इक्वल टू न्यू कार, जो कि बेसिकली दोनों मतलब एक्चुअल रेफरेंस और एक्चुअल ऑब्जेक्ट दोनों बराबर हो जाए, या फिर व्हीकल एक्सटेंड्स फ्यूल लिख दो, है ना. मतलब व्हीकल फ्यूल को एक्सटेंड कर रहा है ऐसा लिख दो, है ना. दीज थ्री मेथड्स, है ना. यहाँ पे अभी क्यों फेल कर रहा है, इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट ये फेल क्यों कर रहा है. इसने पहले तो इंटरफेस व्हीकल और क्लास कार को कंपेयर किया. इट कंपेयर्ड दीज बोथ. ओके, इट फाउंड द ड्राइव इन बोथ, found the drive function in both, so it took the class because it takes precedence. Okay, this is fine. So v1 dot drive is fine. But as soon as it calls v1 dot refuel, the v1 dot refuel is not present in the interface vehicle. Okay, if it had been present in interface vehicle and in car also, because we do not need the implementation in car because it takes it from fuel itself, default. Okay, so if that had been the case, then the class would have taken preference and this would have been printed. Okay, but since v1 dot refuel is not even present there actual reference में, तो that's why it fails. Okay, ये कंपैरिजन एरर दे देता है कि व्हीकल में है ही नहीं. Okay, हमने देखा था कि जब दोनों में मेथड है तभी वो ओवरराइट हो रहा है बेसिकली. Okay,
अगर दोनों में सेम मेथड प्रेजेंट है देन इट टेक्स द प्रेसिडेंस. ओके, बट सिंस रीफिल यहाँ पे है ही नहीं इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है ना. अगर यहाँ पे भी रीफिल होता तो यहाँ पे ये करेक्ट होता है ना. V1 is equal vehicle interface does not contain refill. ओके, फिक्स करने के 3 तरीके. व्हीकल एक्सटेंड्स फ्यूल, या तो एक्चुअल रेफरेंस और एक्चुअल ऑब्जेक्ट को बराबर कर दो या फ्यूल एज अ फ्यूल इसको कास्ट कर दो, है ना. फाइन, सो दैट्स व्हाई लाइन वन जनरेट्स कंपाइलर एरर. फाइन, अब यहाँ पे वो शैलो कॉपी का वो जाता है ना. यहाँ पे हमें देखना है कि आउटपुट क्या आ रहा है ना. फाइनली आउटपुट क्या आएगा. सो जैसे बेसिकली मेन जो फंक्शन है दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. सो जस्ट जंप टू मेन एंड देन वर्क इट फ्रॉम देयर. So first we have a string of मतलब basically a array of authors. Okay, then we are calling the constructor on book constructor with these two as parameters. Okay, as soon as we call the constructor it will give the name and it will give the, okay, so this is the how it is working. Okay, obj name authors. Fine, so for b1 as soon as we pass the constructor it sets the name as Geeta and it passes the list of authors. So this list of authors. Okay, after that we are copying. Okay, basically this is copying and this will shallow copy. Okay, book b2 is equal to new book b1. So it will call this constructor because it is being passed one input. Okay, and since this constructor takes an input, this is overloading. Okay, this is method overloading. So since it takes one input, so it will call this one. Okay, and what it does is it does this dot name is equal to b dot name, basically meaning b2 dot name is equal to b1 dot name. Okay, so it will set these things. Okay, so it has set these things to be same as them. Okay, so no changes it, we are just setting. Okay, book b3 is equal to b1, this is also the same, this is also copying. Okay, and this is perfectly like what you expect to be a reference. Okay, book b3 is just referencing b1. Okay, same for this one, this is just a more deeper shallow copy in a way. Okay, anyways that's it. Okay, fine, done. Fine, so new book b2 is equal to, this is fine, this is fine. Okay, now we are changing b2 dot name to be equal to Nirmala. Okay, so b2 dot name is being changed. Okay, b2 dot name is being changed. So since b2 is being changed, the name is being changed to Nirmala. Okay, so after that b2 dot authors is being changed to, at 0 is being changed to Lakshman. Okay, so basically in place of Tagore we are keeping Lakshman. Okay, so since all of these are referencing this one only, basically all of these are referencing the one author only, one author's list. Okay, so since the name is changed, Nirmala is changed, and then the Tagore is being replaced with Lakshman. Okay, so that's why when we print it, so b1 will have Geeta as name and Lakshman as the, like this is the list. Okay, this is the list and Lakshman is the first entry. Okay, that's all this means. Same for this one, and the name is changed for b2 Lakshman, and then b3 also takes the, b3 basically is referencing b1, so that's why b1 is Geeta and Lakshman, so it will also have Geeta and Lakshman. Okay, now the question arises, why didn't name get changed? Okay, name is unique. Okay, name is unique to each one. Okay, but like there is not a single global name that is being referenced. Okay, there is not like a Geeta and this is being referenced everywhere. This is not like that. Okay, so that's why name didn't get changed, because it is unique to each. Okay, but since authors, this authors is a single thing. Okay, this is the string, this is the array. Okay, so wherever we do change, like कहीं से भी हम change करें, change ही authors ही हो रहा है ना, and this authors is being passed to everywhere. Okay, यहाँ पे भी आ तो authors ही रहा है ना, यहाँ पे भी. So that's why since authors is a single entity, है ना, अब वो कहीं और defined नहीं है, वो unique नहीं है. That is a single global authors array, and any change anywhere to it will reflect in all the places that is referencing that. Okay, so that's why the
author gets changed for everyone but not the name. Okay. Next question is generates output. And so whenever you see like questions like this, you just jump straight to main and then work from there. Okay. So main, same thing. We are doing a reference of fan, but we are storing a smart fan. Okay. Smart fan extends fan, so that's fine. No error. Okay. Fine. SF. So no input. Okay. So first there is no constructor, so that's fine. Okay. We are doing obj.turn on. Okay. So obj.turn on is being called with no input. Okay. So it will check the first it will check the fan and then it will check the smart fan. It will compare between these two like we saw above. Okay. So it will go to the fan, it will go to the smart fan. So it checks that the fan has a turn on. Okay. The fan has another constructor but it takes input, so it will ignore this one. But the smart fan also has a turn on function. Okay. So since both of these have a turn on function, so it will call this one. Okay. It will call the smart fan. Okay. Why? Sorry, this turn on. Okay. Since both has a turn on function inside them, so it will call the smart function turn on. Okay. So what this indeed does, it calls the super dot turn on. So as soon as it calls the super dot turn on without any input, so it will indeed call this one. Okay. So first line that is being printed will still be this. Okay. Because it is calling this one. Okay. Then it runs this one. So this is the second line of output. And then it calls obj.turn-on 3. Okay. So obj.turn-on 3 with input 3 basically. So as soon as it calls this, it again compares the fan and smart fan classes, and as soon as it finds that the fan has the input, okay, constructor with input, okay, this one it has a turn-on function with the input, okay, so it prints this line. Okay. So that's why it gives you 3 lines of output. Okay. So these are the 3 lines. Okay. So hope this is clear. Okay. जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना कि इट कंपेयर्स दीज बोथ. ओके. जो यहाँ पे रेफरेंसेस है ना, उन्हीं रेफरेंस और एक्चुअल ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता है ना. लेट्स गो इट वन मोर टाइम इन हिंदी सो दैट सबको समझ में आए. ओके. सो जब भी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन है, फर्स्ट थिंग तो है कि तुम मेन फंक्शन पे चले जाओ डायरेक्ट. ओके. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक रेफरेंस डाल रहे हैं फैन का, बट वी आर एक्चुअली स्टोरिंग अ स्मार्ट फैन ऑब्जेक्ट. ओके. तो क्या होगा, जैसे ही हम obj.turn on को हम कॉल करेंगे लाइन 2 में, ये पहली चीज क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा दोनों क्लासेस को, स्मार्ट फैन और फैन को, है ना. अब इसने देखा कि टर्न ऑन फंक्शन यहाँ भी है, टर्न ऑन फंक्शन यहाँ भी है, तो ये क्या करेगा, स्मार्ट फैन वाले टर्न ऑन को कॉल करेगा, क्योंकि हमने देखा था थ्योरी वीडियो में कि अगर दोनों में टर्न ऑन है तो जो बेसिकली एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है उसका फंक्शन कॉल होता है ना. So that's why this is being called, है ना, ये कॉल हुआ. So जैसे ही ये कॉल हुआ, ये क्या कर रहा है, ये अपने पेरेंट को, मतलब बेसिकली फैन का जो टर्न ऑन फंक्शन है उसको कॉल कर रहा है. एंड जैसे ही फैन का टर्न ऑन फंक्शन कॉल हुआ, ये यहाँ पे इसने एक लाइन ऑफ आउटपुट दे दिया, एंड देन दिस लाइन गेट्स एग्जीक्यूटेड. सो यहाँ पे सेकंड लाइन ऑफ आउटपुट आ गया. अब हम क्या कर रहे हैं, obj और टर्न ऑन 3, है ना. तो अगर यहाँ पे हम एज ए इनपुट पास कर रहे हैं, जैसे एज इनपुट पास किया, हमें यहाँ पे फैन के पास चले गए. फैन के पास हमने देखा कि टर्न ऑन फंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी है. अब यहाँ पे होने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमने रीफिल वाला में देखा था, अगर ऊपर रीफिल होता तो हमें जरूरत नहीं पड़ती, बट क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे रीफिल नहीं था, ऐसी दिक्कत आ रही थी. तो यहाँ पे जैसे ही हमने टर्न ऑन देखा, तो फाइन, एक्चुअल रेफरेंस में पहले चेक किया, उसको एक्चुअल रेफरेंस में ही मिल गया टर्न ऑन विद द कंस्ट्रक्टर. ओके. एंड यहाँ पे नहीं मिला with speed, है ना, मतलब with any type of input. So it just calls this one. It just calls this one and prints this line. Okay. तो ऐसे करके तुम्हारा 3 लाइन ऑफ आउटपुट आ गए. Which of the statement is false, है ना, false निकालना है तुम्हें. So first thing, savings account S1, jump to the main. We are creating a savings account reference which extends the bank account, so this line is fine. And we also, so this line is fine. Bank account B1 is equal to new savings account.
bank account does not, so this line is error. Let's see more. Okay, let's see more. Okay, system.out.println b1 dot calculate interest. Okay, b1 dot calculate interest. Okay, b1 dot calculate interest. Okay, b1 dot calculate interest. सी यहाँ पे एक और गलती आ गई, देखो इंटरेस्ट रेट जैसे डाल रहे हैं हम, एज सुन एज इट सीज द इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देखो, बट इट इज फर्स्ट इट इज डिफाइंड एज प्राइवेट. ओके, सो ऑब्वियसली दिस कांट बी चेंज्ड. ओके, दिस कांट बी चेंज एंड दिस कांट बी एक्सेस, इवन एक्सेस ही नहीं कर सकता. सो यहाँ पे एक और एरर आ गया तुम्हारा, एक और एरर आ गया यहाँ पे तुम्हारा. ओके, s1 डॉट कैलकुलेट इंटरेस्ट, s1 डॉट कैलकुलेट इंटरेस्ट, दिस इज फाइन बिकॉज ये खुद का ही है ना. ऑल्सो एक और एरर नहीं, मेरा वो एरर नहीं है. ठीक है, फाइन. So let's go to the option, more clear होगा. Line 1 generates compilation error because the method calculate interest cannot be overridden. तो ये true है ना. That's why it is not the correct option because this is true. हमें false option select करना है ना. Line 1 generates compilation error because the method calculate interest cannot be overridden. Obviously, क्योंकि first तो final है ना, final दे रखा है, तो obviously it can't, है ना. ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने कैलकुलेट इंटरेस्ट के साथ हमने क्या डाल रखा है, फाइनल डाल रखा है ना, तो इस एटलीस्ट इस नाम का तो ओवरराइट नहीं होने वाला है ना, इस नाम का तो ओवरराइट नहीं होने वाला. सो सिंस दिस इज ट्राइंग टू ओवरराइट द फाइनल एक्सेस मॉडिफायर, so that's why this is wrong. So ये नहीं होगा, मतलब line 1 generates a compilation error, so that's why it is true, and since it is true it is not the correct option, है ना, कंफ्यूज मत हो जाना. line 2 generates compilation error, हमने देखा line 2 generate compilation error क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है हमारा that is firstly it is private, है ना, private for bank account, so this child class cannot access that. Okay, so line 1 generates compilation error because instance variable interest rate cannot be accessed in class. Okay, because of private access modifier, so this is also true, है ना, ये लाइन ट्रू है, इसलिए ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना. लाइन 3 जनरेट्स कंपाइलेशन एरर बिकॉज अ वेरिएबल ऑफ टाइप सेविंग्स अकाउंट कैन नॉट रेफर टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप बैंक अकाउंट. नो, दिस इज फाइन, सेविंग्स अकाउंट इज एक्सटेंडिंग द बैंक अकाउंट, सो दिस इज अ सब क्लास, दिस इज फाइन. ये गलत है, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एवरी सेविंग्स अकाउंट इज अ बैंक अकाउंट, है ना, होगा, ये लॉजिक से भी है, एवरी सेविंग्स अकाउंट इज अ बैंक अकाउंट, बट नॉट एवरी बैंक अकाउंट इज सेविंग्स अकाउंट, है ना. चेकिंग्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट अभी आजकल बहुत सारे खुल चुके हैं, है ना, तो ऐसे बहुत सारे बैंक अकाउंट्स, एवरी बैंक अकाउंट इज नॉट अ सेविंग्स अकाउंट, सो दैट्स व्हाई लाइन 4 इज द फॉल्स. ओके, लाइन 4 जनरेट्स कंपाइलेशन एरर बिकॉज अ वेरिएबल ऑफ टाइप बैंक अकाउंट कैन नॉट रेफर टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप सेविंग्स अकाउंट. Every bank account is not a savings account, so that's why line 4 is the false option. So after that ये काफी लंबा क्वेश्चन है, आई थिंक यही वाला क्वेश्चन है, एब्स्ट्रैक्ट वाला है क्या, हाँ यही वाला एब्स्ट्रैक्ट वाला. बाकी इसके बाद इसे क्वेश्चंस काफी ध्यान रखने वाले ही हैं इसमें, चलो करते हैं, क्या ही कर सकते हैं, ध्यान से करना. क्वेश्चंस काफी छोटी छोटी चीज है, मेरे को ही 2-3 ट्राइज लगे थे काफी क्वेश्चंस में. ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द प्लेस ऑफ कोड ब्लॉक सो दैट द आउटपुट इज ये. तो आउटपुट हमें ये डालना है, आउटपुट में ये निकालना है. फ्लाई हाई, फ्लाई हाई कहाँ पे आ रहा है, फ्लाइंग हाई, सॉरी फ्लाइंग हाई कहाँ पे आ रहा है, कोड ब्लॉक. अच्छा, कोड ब्लॉक, तो हमें बेसिकली डिफाइन करना है कि हमें एक तो फ्लाइंग हाई आए और स्पैरो टेकिंग ऑफ, मतलब एक बार ये आना चाहिए स्पैरो टेकिंग ऑफ, और एक बार हमें ऐसा फ्लाई करना पड़ेगा कि ये वाला आए, है ना, बर्ड फ्लाइंग ऑफ. तो यहाँ पे हमें कोड डालना है. ओके, फाइन. तो हम कैसे कर सकते हैं ये, पहले तो जो हमें दे रखा है, हमें ऑलरेडी जो चीज़ें दे रखी है कि क्लास पैरो एक्सटेंड्स बर्ड, है ना, क्लास पैरो एक्सटेंड्स बर्ड, क्लास पैरो एक्सटेंड्स बर्ड, है ना.
तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमें पहले तो वर्ड को डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। एंड क्योंकि एक्सटेंड्स है तो दिस शुड बी ए क्लास, है ना। कि अगर इंटरफेस होता तो इम्प्लीमेंट्स होता, है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक्सटेंड है इसलिए ये दिस विल बी ए क्लास, है ना। तो पहले हमें क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा। क्लास को डिफाइन हम कैसे क्या करेंगे, उसमें पहले तो हमें ऑब्जेक्ट डॉट फ्लाई को ऐसे करना पड़ेगा कि बेसिकली दिस विल प्रिंट दिस लाइन, ओके। तो मतलब इस इट विल कंटेन अ फ्लाई ऑब्जेक्ट, ओके, विच विल प्रिंट द फर्स्ट लाइन ऑफ आउटपुट, है ना। तो ये बेसिक हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। एंड इट शुड ऑल्सो इम्प्लीमेंट फ्लाईएबल, क्योंकि हमें हायरार्की सेट करनी पड़ेगी ताकि हमें, क्योंकि देखो डिफॉल्ट फ्लाई और वॉइड टेक ऑफ यहाँ से आएगा, है ना। तो बेसिकली हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा, है ना। सो ये तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, इम्प्लीमेंट, एक्सटेंड, ये तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब देखते हैं कैसे कैसे होगा, है ना। तो क्लास बर्ड इम्प्लीमेंट्स फ्लाईएबल, पब्लिक वॉइड फ्लाई, ये है ना। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, बर्ड को जैसे ही हम, क्योंकि हमें देखो टेक ऑफ तो यहाँ से चाहिए, है ना। टेक ऑफ, वी नीड टेक ऑफ फ्रॉम स्पैरो, है ना। हमें टेक ऑफ कहाँ से चाहिए, हमें टेक ऑफ स्पैरो से चाहिए, क्योंकि हमें ये प्रिंट करवाना है, स्पैरो टेकिंग ऑफ, है ना। तो इसलिए, और क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ हम फ्लाई को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, मतलब बर्ड जो इंटरफेस क्लास है उसके अंदर हम सिर्फ फ्लाई डाल रहे हैं ना, फ्लाई मेथड डाल रहे हैं। सो दैट मीन्स वी नीड टेक ऑफ टू बी कॉल्ड फ्रॉम स्पैरो, ओके। But what this option is doing, it is defining the bird as a concrete class, defines bird as a concrete class, in which case it must define all functions given in flyable interface. But we are not defining takeoff, giving compilation error, है ना। अगर यहाँ पे इसी ऑप्शन में हम टेक ऑफ को भी डाल देते हैं, यानी यही लाइन डाल देते हैं फॉर सम रीजन, मतलब अगर ऑप्शन बनाना होता है ऐसे, if we had done that, then this option would have been correct. But since we are defining it as concrete class and we are defining only one function inside it, so this will give a compilation error to so that ये ना हो, इसलिए हम इसको abstract class define करेंगे। Now bird is an abstract class, since now bird is an abstract class, so it isn't required to provide an implementation for all abstract methods, okay। यहाँ पे हमारे पास दो methods हैं, एक void fly और एक void takeoff, है ना। फ्लाई तो चलो डिफॉल्ट है, सो इवन इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग दिस अपने आप आ जाएगा एक बार के लिए, बट इसको हमें डिफाइन करना ही पड़ेगा इन कॉन्क्रीट क्लासेस, है ना, इन कॉन्क्रीट क्लासेस, इन कॉन्क्रीट क्लासेस। कॉन्क्रीट क्लासेस आर दोज क्लासेस व्हिच आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट, ओके, सिंपल। So since now this is abstract, it is not required to provide an implementation for all abstract methods. It inherits from flyable. It can defer the implementation of its concrete subclasses, okay? जैसे ही हमने ये as abstract class define किया, so अब इसका concrete class क्या हो गया, so sparrow becomes the concrete class, and since sparrow becomes the concrete class, it already has a fly from bird, है ना, fly bird से आ ही रहा है, okay? Sparrow extends bird, so bird fly यहीं से आ ही रहा है, क्योंकि हम फ्लाई को डिफाइन कर ही रहे हैं यहाँ पे, है ना, फ्लाई को डिफाइन कर ही रहे हैं, सो दिस इज फाइन। एंड द टेक ऑफ इट ऑलरेडी हैज इट डिफाइंड, है ना। सो टेक ऑफ को इसने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, सो इट ऑल्सो पासेस द चेक, ओके, पासेस द इंटरफेस चेक, है ना। सो फ्लाई हो गया, टेक ऑफ हो गया, एंड हमारा जो आउटपुट है वो भी आ रहा है, क्योंकि हमने फ्लाई को ऐसे डिफाइन कर दिया यहाँ पे कि बर्ड फ्लाइंग है, एंड टेक ऑफ क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली डिफाइंड है, सो इट विल जस्ट कॉल दिस टेक ऑफ एंड इट विल प्रिंट दिस लाइन, ओके। सो ऐसा हो रहा है ये ध्यान रखना, कॉन्क्रीट क्लासेस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कहाँ पे यूज होंगे ना। हमें यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्यों करना पड़ा, क्योंकि अगर अब हम इसको कॉन्क्रीट क्लास डिफाइन करते बर्ड को, देन हमें टेक ऑफ भी यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता, बट क्योंकि किसी ऑप्शन में हम टेक ऑफ को डिफाइन नहीं कर रहे, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही होना पड़ेगा, है ना। उसके बाद करेक्ट ऑप्शन करना है ना। सो देखना है बेसिकली कि हमारा आ रहा है या नहीं। सो फर्स्ट थिंग मेन, ओके। So we are referencing a wait staff, but we are saving a wait staff, okay. So this is fine. Reference and object are equal, okay. So let's call the constructor. We have a constructor here. We do not have a constructor, sorry. So it just stores the, okay, stores the function, okay.
and after that we are calling the s1 dot order dish is pasta. Okay, so this calls this function. What this function does is, first it creates a chef object. Okay, s1 is passed, so c now holds a reference to s1 in its callback field. Okay, basically the this object is being passed to, मतलब basically एक reference बना रहे हैं हम, है ना. This is basically storing a reference. Okay, s1 is passed, so c now holds a reference to s1. Okay, c is basically referencing s1. Okay, that's all it is doing. Okay, उसके बाद क्या कर रहा है, c dot prepare dish को कॉल कर रहा है, c dot prepare dish. So basically it will call this one. What it does is, it first prints these two lines. Okay, ये पहला लाइन प्रिंट हो गया, ये सेकंड लाइन प्रिंट हो गया. अब क्या कर रहा है वो, कॉल बैक डॉट ऑन ऑर्डर रेडी. कॉल बैक, अब कॉल बैक में क्या है, कॉल बैक में बेसिकली होल्ड्स अ रेफरेंस टू s1, है ना. हमने यहाँ पे देखा कि बेसिकली कॉल बैक इज इक्वल टू cb, है ना. as soon as it new chef this, okay, as soon as it calls this, so this goes to the constructor, this goes to the constructor, and this creates a new chef with the callback being equal to whatever is being passed. यहाँ पे पास बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे पास हो रहा है s1, है ना. यहाँ पे पास हो रहा है s1. यहाँ पे ऐसे मान लो c s1 होल्ड कर रहा है एंड c is being passed to callback, so callback is basically again passing again holding s1, है ना, या referencing s1, है ना. तो यहाँ पे s1 आया, s1 is being passed to c is being passed to this, so callback is equal to c is equal to s1, ऐसा, है ना, ऐसा reference, है ना. so अब क्या होगा, so हमारा ये सेट हो गया. then as soon as we call callback, so callback is instead कॉल करता है c को, which basically calls s1. so basically s1 dot on ready order, so s1 dot on ready order, it just prints the let's just print this line. so 3 लाइन ऑफ आउटपुट आएंगे, this, है ना. ये देख के ना मैंने यहाँ पे रीजन डाल, ये गलत क्यों है, ये क्योंकि कॉल बैक इज ऑफ टाइप ऑर्डर कॉल बैक, है ना. कॉल बैक इज ऑफ टाइप नहीं, यहाँ पे नहीं, कॉल बैक इज ऑफ टाइप ऑर्डर कॉल बैक, है ना. बट क्या हो रहा है, बट ऑन ऑर्डर रेडी इज डिफाइंड इनसाइड ऑर्डर कॉल बैक, है ना. लिख रखा है, देख लेना, थोड़ा लाइक ट्राई करके देखना ये कोड करके, है ना. बाकी बेसिक ये ऑप्शन सही क्यों है वो मैंने समझा दिया, कोड कैसे काम कर रहा है वो समझा दिया. कितने लंबे पेपर है. ओके, एंटर द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इन द ब्लैंक लाइन 1 सच दैट आउटपुट इज, ओके, आउटपुट ये होना चाहिए, लाइन 1 यहाँ पे है, while iteration dot has next, मतलब बेसिकली जब तक वो has next करता रहेगा, जब तक next song है it should get next and play basically, है ना. ऐसे ही काम करेगा जैसे प्लेलिस्ट कैसे काम करता है, अगर next song है तो अगले song को play कर देगा, अगले song को पहले get करेगा and then it will play that. okay, that's how the playlist is working, है ना. अब देखते हैं कर कैसे रहा है ना. पहले first we are defining a playlist. okay, न्यू सॉन्ग प्लेलिस्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, पब्लिक सॉन्ग प्लेलिस्ट, काउंट इज इक्वल टू 3, सॉन्ग्स यहाँ पे डिफाइन हो रहा है. दिस इज हार्ड कोडेड, है ना, कुछ हो नहीं रहा, दिस इज हार्ड कोडेड बेसिकली. ओके, आफ्टर दैट क्लास ट्रैक एक्सटेंड सॉन्ग. ओके, टाइटल सेट कर रहा है, प्ले कर रहा है ना, बेसिकली तो कुछ नहीं कर रहा. हमें यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दे रखी, हमें बस बता रखा है कि दिस चेक्स इफ देयर इज अ नेक्स्ट सॉन्ग एंड दिस जस्ट रिटर्न द न्यू सॉन्ग. ओके, सो यहाँ तक तो ठीक है. हमें आउटपुट क्या चाहिए, हमें आउटपुट चाहिए सॉन्ग ए, सॉन्ग बी, सॉन्ग सी, है ना. मतलब यहाँ पे ये वाला जब आउटपुट होगा तो बेसिकली फर्स्ट सॉन्ग ए आना चाहिए, फिर सॉन्ग बी, फिर सॉन्ग सी. हमें चेंज क्या करना है, हमें ये चेंज करना है, तो हमें गेट नेक्स्ट करना पड़ेगा पहले तो, है ना. कोई यहाँ पे जेनरिक ऑब्जेक्ट का तो दिक्कत नहीं है. ओके, बट यहाँ पे एक दिक्कत है. देखो हमने ट्रैक को क्या कर रखा है, हमने प्राइवेट कर रखा है,
तो हम डायरेक्ट ट्रैक की चीज़ों को हम कॉल नहीं कर सकते, हमें पहले सॉन्ग को करना पड़ेगा एंड फिर हमें डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे भी प्ले डिफाइंड है, यहाँ पे प्ले डिफाइंड है। सो सिंस दोनों जगह प्ले डिफाइंड है एंड सॉन्ग का जो सॉन्ग इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, सॉन्ग का जो कॉन्क्रीट क्लास बन जाता है वो ट्रैक बन जाता है ना। एंड जैसे वो ट्रैक जैसे कॉन्क्रीट क्लास बन जाता है सॉन्ग का, सिंस बोथ हैज द प्ले मेथड डिफाइंड इन देम, सो ट्रैक का प्ले मेथड कॉल होगा है ना। सो इट विल कॉल द ट्रैक प्ले मेथड है ना। सो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो पहले हमें एज ए सॉन्ग इसको कास्ट करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज इट इज डिफाइंड एज प्राइवेट क्लास है ना। ट्रैक हम डायरेक्ट ट्रैक डॉट नहीं कर सकते है ना, क्योंकि दिस इज डिफाइंड एज प्राइवेट है ना, ये एक प्राइवेट इन क्लास है ना, विच इज नॉट एक्सेसिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड है ना। सो इसलिए ये गलत है एंड ये सही है। तो सॉन्ग हमने क्या किया, पहले तो हमने गेट कर लिया है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पहले गेट किया, जैसा कि हमने देखा, पहले हमने गेट किया, तो गेट नेक्स्ट है ना। फिर उस जो भी वो आया, जो भी गेट आया उसको हमने एज ए सॉन्ग बना दिया है ना, सॉन्ग में कास्ट कर दिया। फिर हमने उस पर प्ले कॉल किया एंड जैसे ही हमने उसे प्ले कॉल किया, बेसिकली क्या हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है सॉन्ग, तो ये अपना जो कॉन्क्रीट क्लास है उसको ढूंढ रहा है, विच बेसिकली इज ट्रैक इन दिस केस है ना। एंड सिंस प्ले दोनों जगह है, इट विल कॉल द प्ले यहाँ पे है ना। एंड यहाँ पे कोई डिफॉल्ट है भी नहीं, तो दिक्कत भी नहीं है, इसको डिफाइन करना ही पड़ेगा वैसे भी है ना। सो दिस विल कॉल दिस वन एंड दिस विल प्रिंट आवर रिक्वायर्ड आउटपुट है ना। सो ट्रैक इज अ सब क्लास ऑफ सॉन्ग. This is called song object. Since the runtime object is a track, the track's play method is executed. Basically, the concept of dynamic dispatch. Track is the concrete class for abstract song class है ना, क्योंकि वो concrete class है, so that's why track का play method call हो रहा है। and वैसे भी song में default implementation कुछ है नहीं, so इसको define करना ही था है ना, वरना वो वही compilation error दे देता है ना। so fine. Okay. This one. Identify the correct options to fill in the blank at line 1. Okay. करना क्या है, सच द आउटपुट इज ये है ना। आउटपुट ऐसा है, वॉशिंग मशीन इज टर्न डाउन, मतलब हमें पहली लाइन यहाँ से चाहिए, वॉशिंग साइकिल स्टार्ट्स हमें दूसरी लाइन यहाँ से चाहिए, मतलब टर्न ऑन जैसे ही कॉल हो रहा है, दिस शुड कॉल दिस लाइन है ना। सो ये तो फाइन है, जैसे ही ओबीजे डॉट टर्न ऑन कॉल हो रहा है, अप्लायंस में भी टर्न ऑन है, यहाँ पे भी टर्न ऑन है, दोनों क्लास में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो, एंड एज सून एज द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस इट विल चेक द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। सो एक्चुअल ऑब्जेक्ट सिंस इट इज वॉशिंग मशीन, सो इट विल कॉल दिस वन। ओके, सो दिस इज फाइन, पहला लाइन तो यहाँ तक तो हो गया अपना। हमें करना क्या है, हमें ऐसे कॉल करना है कि ये लाइन कॉल हो है ना, मतलब स्टार्ट वॉश साइकिल कॉल हो। बट अगर हम डायरेक्टली ओबीजे डॉट कर रहे हैं तो क्या दिक्कत आएगा, ओबीजे डॉट जैसे ही हम कर रहे हैं it will call this one, but this does not have an obj. No, sorry, this does not have a this does not have an start wash cycle है ना, इसको मैं start बोल रहा हूँ, start है ना। तो दिक्कत क्या है कि यहाँ पे start नहीं है, so we need to cast it as washing machine है ना, हमें obj को as washing machine cast करना पड़ेगा, and then we can call the start function. So that's why it always calls this one. So that's why we first call it, we were first we first typecast it, sorry नाम भूल गया था, first typecast it and then we call this ना। हमें typecast क्यों करना पड़ा, समझ में आया? ये बस चेक है, this is basic obj obviously is an instance of washing machine, क्योंकि हम वही उसका बेस क्लास से डिफाइन कर रहे हैं है ना। दैट्स व्हाई इट इज ऑब्वियसली ओबीजे इज ऑब्वियसली अ सब क्लास ऑफ वॉशिंग मशीन। अब क्या कर रहे हैं हम, इज बेसिकली कास्टिंग इट है ना। हमें कास्ट क्यों करना पड़ा, क्योंकि हाँ अगर हम डायरेक्ट ओबीजे डॉट स्टार्ट वाला कॉल कर देते तो ये पहले चेक करता है अप्लायंस को, बट सिंस अप्लायंस में स्टार्ट वॉश साइकिल वाला मेथड है ही नहीं, इट डज नॉट कंटेन द स्टार्ट वॉश साइकिल मेथड, so that's why it will give an compilation error here only है ना, यहीं पे compilation error दे देता है। हमें क्या करना पड़ेगा, we need to typecast it. Why? Because washing machine does contain the start wash cycle, so we need obj to be a washing machine है ना, reference भी washing machine हो and actual object भी washing machine हो, that's why we are typecasting it है ना।
हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने जैसे ही बोला कि ऑब्वियसली हम सब क्लास का रेफरेंस डाल रहे हैं, सो इट विल ऑब्वियसली बी ट्रू, है ना, इसलिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है हमें ये चेक करने की, बट सिंस ये मल्टीपल चॉइस है तो दोनों करेक्ट होंगे। दिस शुड बी द लास्ट क्वेश्चन। हाँ ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, सच दैट द आउटपुट इज नॉट एलिजिबल फॉर इंश्योरेंस क्लेम, है ना, नॉट एलिजिबल फॉर इंश्योरेंस क्लेम कॉल करना है हमें। सो मेन क्या हो रहा है, main is fine, and then we are calling with a new insurance of 20, है ना। so हम चेक क्या कर रहे हैं, greater than 25, मतलब greater than 25 है तभी इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है। so this already returns that no, not eligible for claim, है ना। so this will already return this, है ना, fine। दिक्कत कहाँ पे आ रही है, दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि हम डायरेक्ट इसको कॉल नहीं कर सकते, है ना, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट INS1 डॉट कुछ ऐसा है नहीं कि मैं डायरेक्ट कॉल कर दूँ, मतलब कोई मेथड नहीं है, दिस इज नॉट अ मेथड। Yes, sorry, this is not a public method, sorry, this is not a public method, this is not a public method, है ना। तो अब ये फंक्शन कर क्या रहा है बेसिकली, दिस फर्स्ट टू डिफाइन चेक एलिजिबिलिटी एज अ मेथड एंड देन इट रिटर्न्स समथिंग, व्हाट इट रिटर्न्स इज इट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ द टाइप क्लेम एलिजिबिलिटी, ओके, इट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लेम एलिजिबिलिटी टाइप, है ना। सो क्योंकि ये एज एन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, वी फर्स्ट नीड अ वेरिएबल टू स्टोर, है ना, इफ कॉल्ड, तो हमें कुछ तो इसको स्टोर करना पड़ेगा, है ना, मतलब यहाँ पे सी क्लेम एलिजिबिलिटी सी इज इक्वल टू इसको कॉल करना पड़ेगा INS1 डॉट चेक एलिजिबिलिटी, है ना। ऐसे कॉल होता है ना, तो फाइन, हमें इसको स्टोर करना पड़ेगा। एक और तरीका क्या है, क्योंकि एक और तरीका क्या है कि बेसिकली जब ऐसे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है तो वी कैन, एंड सिंस दिस इज पब्लिक, है ना, पब्लिक, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नॉट एलिजिबल फॉर क्लेम को हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, नॉट एलिजिबल डॉट क्लेम डॉट प्रिंट एलिजिबिलिटी, है ना, हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं ना, क्योंकि दिस इज वन मेथड, दो मेथड से इसको कि हम पहले तो हम इसको यूज करें जो ये रिटर्न कर रहा है। फर्स्ट मेथड इज वी यूज द we use the object that is being returned and then call print eligibility on that, okay, since it is implementing that, है ना। so the second method is, since it is public, we can all directly call the eligibility function, okay, on the not eligible claim type, okay. so that's why these both options are correct. so this is first method, okay, and this is second method, claim eligibility C1 INS1 डॉट चेक एलिजिबिलिटी। सो जैसे ही ये कॉल हो रहा है INS1 डॉट चेक एलिजिबिलिटी, इट पासेस द 20 एज इनपुट एंड सिंस 20 इज लेस देन 25 इट रिटर्न्स अ नॉट एलिजिबल फॉर क्लेम ऑब्जेक्ट, okay, and since any is being called, like not eligible is being called, so this now contains a not eligible object, okay, and not eligible object, after that we can call that, okay, since it is private, no sorry, now C1, so how this looks, okay, ये कैसे काम कर रहा है, देखो, returns a CE object, है ना, first it returns a CE object, then claim eligibility C1 is equal to new not eligible, है ना, basically reference ये है and actual object ये है ना, वही जो हम क्वेश्चन अभी ऊपर तक करते आए, है ना। so now we call the C1 dot print eligibility, है ना, since C1 dot print eligibility it goes to the reference first, it goes to reference first, it goes to reference first, है ना। अब यहाँ पे इसको मिला नहीं, है ना, सॉरी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, सो इट फर्स्ट गोज टू रेफरेंस, है ना, सी इज द इंटरफेस, सो यहाँ पे वाइड प्रिंट एलिजिबिलिटी, है ना। तो अब ये इसका कॉन्क्रीट क्लास ढूंढेगा, इसका कॉन्क्रीट क्लास कौन है, मतलब क्लास के अंदर जो इसका नॉट एलिजिबल फॉर क्लेम ये वाला क्लास है, दिस इज द कॉन्क्रीट क्लास फॉर this, okay, so since this is the concrete class for this, it will just call this one, okay, so that's why not eligible for insurance claim is being called, okay, समझ में आया। ये फर्स्ट मेथड समझने में थोड़ा दिक्कत है, बाकी सेकंड तो डायरेक्टली कॉल है, उसमें कुछ है नहीं, है ना। सो हो क्या रहा है एक बार फिर से देखते हैं, लेट्स गो ओवर इट वन मोर टाइम। फर्स्टली वी आर कॉलिंग द न्यू इंश्योरेंस विद 20 एज इनपुट and then we will obviously call the check eligibility function, okay, that's fine।
So but as soon as we call the check eligibility function, we can see that claim eligibility, what is the return type? This method is returning an object of time claim eligibility. Okay, claim eligibility returns an object of time claim eligibility. So we obviously need a variable to store this if we are calling that function. Okay, now let's go back to this, how it is being stored. Okay, so as soon as we call this 20 is less than 25, so this calls a this returns a not eligible object. Okay, and this is being stored as claim eligibility C1 object. Okay, so it returns a CE object, and CE C1 is equal to new not eligible. Okay, so this is the reference and this is the object. Okay, and then we call the print eligibility on this one. Okay, as soon as we call the print eligibility on C1, C1 is basically the reference of this, okay, interface. But since this is not this is just the interface, it searches for the concrete class. Concrete class, it finds inside class insurance, it finds the not eligible for claim class, and so it prints this one. Okay, and this is just directly calling that. Okay, so first INS1, it calls the check eligibility function. So 20 is less than 25, so it returns what it returns. It returns a not eligible object, and it is being passed to dot print eligibility. Dot print eligibility, है ना? This is how it is working. ये काम क्यों कर रहा है? क्योंकि this is the inner class, सारे एक ही जगह पे defined है, और इसलिए it is being accessible, है ना? अगर private class, ये वाला class कहीं बाहर define होता, मतलब इस bracket के बाहर define होता, जैसे यहाँ पे public class के साथ या कहीं और, है ना, तो तब नहीं होता, क्योंकि ये इनका इनर क्लास ही है. दैट्स व्हाई वी कैन डायरेक्टली कॉल दिस, है ना. ये भी ध्यान रखना कि क्यों कॉल हो रहा है ना. आई कैन नॉट कॉल द मेन मेथड फ्रॉम एनीवेयर एल्स, है ना. मतलब सॉरी, अगर यहाँ पे प्राइवेट कोई मेथड होता है, इसके अंदर मान लो प्राइवेट प्रिंट पीटी, है ना, अगर ये यहाँ पे है और ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइंड है, तो ये कॉल नहीं होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये सारे इनर क्लासेस है. इस क्लास इंश्योरेंस के लिए ये सारे इनर क्लासेस है, तो जो भी ये इंटरनल वर्किंग्स है, दे कैन को एक्सिस्ट, है ना, मतलब एक दे कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर, इसलिए ये दिस इज आल्सो फाइन, है ना. सो इट एलिमिनेट्स द इंटरमीडिएट वेरिएबल, जो हमने C1 में स्टोर किया, दैट इंटरमीडिएट वेरिएबल इज बीइंग एलिमिनेटेड, उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, है ना. ओके, दिस इज फाइन. फर्स्ट वाले का ध्यान रखना, फर्स्ट वाले का 4 ही है, वो मैंने गलती से 5 गिन लिया था, है ना. लेट्स गो ओवर दिस वन मोर टाइम. अगर मतलब थोड़ा सा दिक्कत है, मैं पता नहीं कैसे मैंने कॉल कर लिया. सो मेथड इज मेन इज फर्स्ट एंड दिस कॉल्स इट. ओके, दिस इज सेकंड. This is then method 3 calls this one. This is third. Method 2 calls this 4. ओके, हाँ 4 ही होंगे. ठीक है, 4 ही है. ठीक, मैंने 5 कैसे गिन लिए थे, देख लूंगा मैं, है ना. मैं नोट्स में देख लूंगा, मैं चेक कर लूंगा. फाइन, ऑल द बेस्ट. एक और PYQ आएगा शाम को.